Assalamu alaikum everyone, this is Sayyida Zohar Rouj and today this is a lecture number 1 on digital signal processing. We are discussing basics of DSP. At the end of this video you are able to answer the following questions. What is a digital signal processing and why to study it? What are the practical implementations of DSP? What is signal and signal processing? What is quantization and Nyquist theorem? DSP is basically a type or you can say a sub branch of signal processing. इसकी एक another branch होती है जिसको आप analog signal processing भी कहते हैं. ठीक है, यानी signal processing is the mother field और उसके सब fields हैं digital signal processing and analog signal processing. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस सिग्नल की. First, you analyze the signal and modify it. You apply different computational and mathematical algorithms on it, through which आपको एक higher quality signal मिलता है. कुछ practical implementations हैं जो हम discuss करेंगे of DSP. यानी कि practical applications क्या हैं? So number 1 is audio and speech processing. For example, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है? और मैं जब ये वीडियो सुनती हूँ फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग के बाद तो मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ कम है, ठीक है? तो मुझे अगर इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना है या इसके अंदर जो बहुत सारी नॉइज़ है उसको यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ़ैन चलाया हुआ है तो फ़ैन की नॉइज़ है, सराउंडिंग नॉइजेज हैं डिफरेंट, तो अगर मुझे उनको रिमूव करना है सो आई रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर, ठीक है? वो क्या करेगा बेसिकली वो इन सब चीज़ों पे काम करेगा, फिल्टरिंग करेगा, नॉइज रिमूवल करेगा. सो बेसिकली दिस इज ऑल DSP, ठीक है? उसके अलावा सेकेंड एप्लीकेशन इज सोनार एंड रेडार. सो बेसिकली सोनार जो है वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप करते हैं क्या, साउंड प्रोपिगेशन करते हैं एंड इट इज यूज्ड टू नेविगेट एंड कम्युनिकेट the objects which are under the surface of water. Radar क्या है? Basically it is the use of radio waves to determine the range, angle and velocity of objects. Right? Digital image processing ये तो बहुत common चीज़ है और एक न हर 5 में से कोई 3 शख्स तो ये इसको जानता है, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या है कि आप इमेज के में से नॉइज को रिमूव करते हैं, ठीक है? और उसके कलर्स को ब्राइट करना या कलर्स को फेड करना, ये सब कुछ क्या है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. ऑडियो कोडिंग एंड वीडियो कोडिंग. सो ऑडियो कोडिंग इज बेसिकली फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल ऑडियो. आप जो है बेसिकली फॉर एग्जांपल एक ऑडियो है और उसके अंदर आपके पास जो सॉफ्टवेयर होंगे जो कि एक ऑप्शन देते हैं आपको कि कन्वर्ट इट इनटू MP3 और WAV और AAC एंड OPS. सो आप ये सब कुछ जो है कर सकते हैं थ्रू DSP एंड वीडियो कोडिंग भी कर सकते हैं. यू कैन स्टोर योर वीडियोस एंड ट्रांसमिट योर डिजिटल वीडियो कंटेंट, ठीक है? और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू यूज DST यानी discrete cosine transform for that. We are going to get into the details of all this in the upcoming videos. Let's continue with the chapter. Sixth application क्या है इसकी? Signal processing for telecommunication control systems and biomedical engineering. Telecommunication, you all know mobile signals and laptops and etc. Control signals क्या है? Electronics और mechanics की application होती है to the other devices to control those devices or to regulate those devices. Biomedical engineering से most of you are aware with it, but जो नहीं जानते वो उनके लिए basically engineering की application to the medical devices. अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि DSP जो है इट्स एप्लीकेबल टू बोथ स्ट्रीमिंग डेटा एंड स्टोर्ड डेटा.
यानी वो डेटा जो आप अभी फॉर एग्जांपल जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई कैन अप्लाई सम सिग्नल्स, आई कैन अप्लाई सम टेक्निक्स ऑन दिस सिग्नल एज वेल एज कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके उसके ऊपर अप्लाई करूँ। तो यानी स्टैटिक स्टोर डेटा पे भी और स्ट्रीमिंग डेटा दोनों पे मैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो एक चीज हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी, दैट इज ऑफ सिग्नल। सो व्हाट इज अ सिग्नल? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज विद टाइम, स्पेस और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि टाइम से, स्पेस से और बहुत से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वेरी करती है। तो इसके बहुत से टाइप्स हैं जिनको हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ you can see there is a linear signal, a non-linear signal, a maze signal and a video signal. What is a system? Physical device or software that performs operations on signal for noise removal and filtering. कोई भी एक फिजिकल डिवाइस भी हो सकती है या कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करता है सिग्नल्स के ऊपर इन ऑर्डर टू रिमूव द नॉइज फ्रॉम इट एंड इन ऑर्डर टू फिल्टर इट। ऑलराइट, अच्छा, सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होती है? सिग्नल प्रोसेसिंग हम इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिग्नल। ठीक है, अब मैं अगेन इसी की मिसाल देती हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे लगता है कि कुछ मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया या कुछ जो है वो कोई जो है कम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी है, जो कि मैं अपनी वीडियो में से वीडियो को कम करने के लिए उसको रिमूव कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँ कि उसको I'm going to remove that part of the video. So I'm going to extract information, important information from a signal. This is how I am doing signal processing, right? So इसके कुछ steps होते हैं जिसमें sampling आता है, quantization आता है and coding आता है। तो sampling के अंदर for example आपके पास एक analog signal आता है, एक analog input आता है and that is called continuous time and continuous value signal. उसके बाद उसके ऊपर quantization होती है which is basically the middle stage of analog and digital signal और इसको आप क्या कहते हैं? Discrete time and continuous value signal. And then you are going to apply coding, process of coding, which is the final step, and you are going to achieve a digital signal in that, which is the discrete time and discrete value signal. Alright, so what is quantization? Let's come towards quantization. Quantization is dividing output in levels. जितने ज़्यादा लेवल होंगे, high number of levels, accuracy आपकी उतनी ज़्यादा होगी. If you're not getting any of the concept, you can comment, right? और आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो मैं उसको क्लियर आउट कर सकती हूँ. और you can email me. I'm going to give my email address in the description box. आप मुझे email करके भी पूछ सकते हैं अपनी queries. Now what is the last concept of this video? This is the Nyquist Theorem, and Nyquist Theorem is basically sampling frequency is equal to twice of the maximum frequency component present in any analog signal. Sampling frequency के concept को हम next video में discuss करेंगे. ये बहुत important concept होता है जब भी आप कोई signal processing start कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी होती है कि what is the sampling frequency of that signal. तो वो क्या होगी बेसिकली? वो ट्वाइस होगी टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन एनी एनालॉग सिग्नल. फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज 20, then the sampling frequency is going to be 40 hertz. Alright, that's all for this video. We are going to discuss a lot from digital signal processing in the upcoming videos. Stay tuned. Thank you, and don't forget to like.